अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम CSS का अगेन एक ओल्ड पेपर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का 2021 का पेपर। ठीक है। हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कंप्लीट। जैसे कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि सोल्यूशन देखेंगे तो पेपर इस वीडियो में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको एक आंसर देख रहे हैं तो साथ अगर पेपर को भी कंपेयर करेंगे क्वेश्चन क्या है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आपको पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो it is a solution of CSS 2021 English Pressy and Composition paper. Question number 2 was: write a précis of the following passage in about 120 words and suggest a suitable title. ठीक है, टाइटल सजेस्ट करना था और प्रेसी करनी थी। प्रेसी भी कर दी है और टाइटल भी लिख दिया है। मैं रीड कर देती हूँ आप लोग के लिए। Nizar Hassan, born in 1960, took to filmmaking after graduating from Haifa University, Israel. His first film, Independence, satirizes Israeli notion of independence, which was in reality a blatant occupation of Palestinian land. Later, when Israel was trying to grab the remaining areas of Palestinians, Nizar produced a serial, My Grandfather's Path. Theme of the serial is that if we focus too much on our enemy, we ultimately become like them, like him. According to him, Palestinians fell into this trap. They focused so much on violence and aggression by the Zionists that they started thinking like them and forgot the beautiful aspects of life. Nizar believes his love for art saved his mind. So, title would be Art Against Odds, Nizar Hassan's Palestinian Story. Fine? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्रीहेंशन का होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। Why does the doctrine of power set by Imperial America deny space to counseling? Answer would be the doctrine of power set by America refuses to consult allies and other nations before attacking any country because it believes it is justified in attacking the hostile nations as a preemptive measure to thwart possible acts of terrorism. The US attack on Iraq divided the United Nations, and the US refused to listen to any advice or argument. Question number 2 is: what is the essence of moral equivalence, whereas war has no moral justification? Answer is: Americans claim that they attack other countries because they feel there is a security threat from these states. How can the US feel insecure by the countries that are militarily too weak to challenge it? It is hard to find any moral justification for attacking the weak countries. Well, question number 3 is: why do countries occupied and under the tutelage of hyperpower have no peace? Answer is: there is chaos and disorder in the countries occupied under the tutelage of hyperpower because, in absence of democracy, these countries are virtually controlled by warlords and terrorist groups. As in the case of Afghanistan, government's control does not extend beyond Kabul. Question number 4 is: arguably, Europe and hyperpower US are at cross purposes over the concept of war. Are they? Why? Answer is: they are at odds as the European countries want to launch any strike after the approval of the United Nations, as it would give such an action a universal legitimacy. On the other hand, the US has followed a policy of my way or the highway. Fine? एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, वो ये है कि व्हाट टोनी ब्लेयर्स मीन्ड बाय वाइज काउंसिल एंड डिड इट प्रिवेल?
Answer is Tony Blair offered wise counsel as a means to pacify the United States as warmongering by the hyperpower would attract worldwide criticism and mammoth public protest as well. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन था करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग. करेक्शन करनी थी, मैंने सबकी कर दी है. देख लेते हैं. ये करेक्ट सेंटेंसेस है, याद रखिएगा. ओरिजिनल सेंटेंसेस के लिए पेपर देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट वन इज दे वर लाइंग इन द सन. Second is, he will not come unless he is asked. Third one is, John as well as Harry bears witness to it. Fourth one is, the crew were now on board and they soon busied themselves in preparing to face the coming storm. Fifth one is, can I get a piece, please? Sixth one is there a sports club nearby? Seventh one is, the coat is too big. And the last one is, it's only a short journey by train. Journey spelling यहाँ पे OUR आएगा. There is a mistake. Fine. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ए था हमारे पास. Punctuate the following text when necessary. पंचुएशन कर दी है, एक दफ़ा रीड कर देती हूँ. That familiarity produces neglect, comma, has been long observed, full stop. The effect of all external objects, comma, however great or splendid, comma, ceases with their novelty, full stop. The courtier stands without emotion in the royal presence. Then there's semicolon. The rustic tramples under his foot the beauties of the spring, comma, with little attention to their colors or their fragrance, semicolon, and the inhabitant of the coast darts his eye upon the immense diffusion of waters, comma, without awe, comma, wonder or terror, full stop. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबकी ही दे दी है. सेंटेंसेस मैं आपको रीड कर देती हूँ. The knavish wolf was able to convince the pig to let him into his house. Second is, I looked this word up in the dictionary, but I still don't understand it. Third one is, I need to learn these verbs by heart by tomorrow. Fourth one is, the morgue is redolent of the odor of deceased individuals. Fifth one is, he is cogitating upon some means of revenge. Sixth one is, he was reticent to do anything about the problem. Seventh one is, his body is impervious to moisture. And the last one is, Ahmed applied to the bank for a loan. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो ये था हमारा पेयर्स ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट देयर मीनिंग्स. राइट, तो 5 के बजाय मैंने सबके दे दिए. रीड कर देती हूँ. पहला था जाइब और जाइब. अब यहाँ पे जो जी से जाइब है उसका मतलब होता है डिराइड. सो सेंटेंस में अगर हम यूज़ करें द क्राउड जाइब्ड एट द स्पीकर. ठीक है, और उसके बाद अगर जाइब हम दूसरे की बात करें जे से जाइब तो उसका मतलब होता है अग्री या फिट. देयर स्टोरी डजंट क्वाइट जाइब विद द एविडेंस. ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है पेयर ऑफ वर्ड वो है एपिग्राम या एपिग्राफ. अब एपिग्राम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है क्विप या जस्ट. द किंग amused with his epigram gave him a pension. ठीक है, उसके बाद एपिग्राफ का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज एट बिगिनिंग ऑफ बुक. द एपिग्राफ टू द चैप्टर रीड्स वन मैन्स फ्रीडम इज अनदर मैन्स स्लेवरी. ठीक हो गया. उसके बाद थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ब्रॉल या बॉल. ब्रॉल का मतलब होता है फाइट या स्कफल. He ended up brawling with photographer. उसके बाद बॉल का मतलब होता है शाउट या येल. डोंट बॉल इन पब्लिक. ठीक है,
उसके बाद है क्रिब या क्रिप्ट। क्रिब का मतलब होता है क्रेडल। ही मेड अ सिंपल क्रिब फॉर द बेबी। उसके बाद क्रिप्ट का मतलब होता है टॉम्ब। बेनिटो मेसोलिनीस क्रिप्ट इज इन सैन कैसियानो सिमेंट्री। उसके बाद बार्मी या बाल्मी। ठीक है, बार्मी का मतलब होता है फुलिश या सिली। आई थिंक दैट्स अ बार्मी आइडिया। और बाल्मी का मतलब होता है माइल्ड या टेम्परेट। A week of balmy spring-like weather could be arriving soon. उसके बाद peat या petite। Peat का मतलब होता है partly decayed plant matter used to improve garden dirt or as fuel. Research and innovation must be applied to find alternatives to peat for the horticultural industry. और petite का मतलब होता है dainty या delicate. She was dark, petite and sophisticated. उसके बाद है मोनोगैमस या मोनोजेनस। मोनोगैमस का मतलब होता है हैविंग ओनली वन मेट एट अ टाइम। Penguins from monogamous couples for breeding purposes. उसके बाद monogenous का है generated by means of fission as modes of asexual reproduction. All the people here are named Littlefield or Ball or Mott or Rose. The breed is monogenous but not clubby. उसके बाद है पोस्टिलियन या पोस्टीरियर। पोस्टिलियन का मतलब होता है someone who rides the near horse of a pair in order to guide the horses pulling a carriage. The postilion started, the carriage wheels rattled. और posterior का मतलब होता है rear या back. The posterior chain runs from the back of your shoulders all the way down to your heels. ठीक हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए। और क्वेश्चन नंबर 7 था ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ट्रांसलेशन में दे दी है, रीड कर देती हूँ। Contrary to the culture of sycophancy and prostrating before the colonial English authority, promoted by the British and freely adopted by the Indians at that time, both Sayyid Ahmad Khan and his venerated and enlightened son Sayyid Mahmud treated the English as their equals. The incident of the Agra Darbar of 1867 was known quite well to the Indians, both Hindus and Muslims. Sayyid Ahmad Khan had stayed away from the Darbar because Indians had given seats inferior to the English. A medal was to be conferred on Sayyid Ahmad Khan at that Darbar. Williams, the commissioner of Meerut, was later deputed to present the medal to Sayyid Ahmad Khan at Aligarh railway station. And that's it. ये पूरे पेपर के सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।